Good morning, all of you. Welcome back to the channel. So let's start with the analysis for 18th of November. So we've been seeing assembly elections going on in Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Voter turnout crosses 74%. So this is comparatively higher because these two states, they are affected by the left-wing extremism also. So given that, we are seeing the voter turnout to be rising. So parties exude confidence in the high-stakes electoral battle, and there have been complaints of misconduct also. So herein the role of Election Commission of India, and when we talk about the reforms, what electoral reforms can be done, so we always talk about the model code of conduct that should be made legally enforceable in order to strengthen the power, strengthen the hands of Election Commission of India. As we say, we need to provide more teeth to ECI. So that can be done when we basically talk about dealing with these kind of challenges and the misconducts which are reported. And basically, blast was also reported, IED blast in Chhattisgarh, and clash in Madhya Pradesh resulted in death of Congress leaders AD also. So we are having, basically, we deploy the security forces also in order to ensure such clashes do not happen and do not result into deaths of people also. Okay, now there is another challenge when we were talking about this collapse of the tunnel. So rescue work now has been stopped क्योंकि अब there is more fear कि और अगर मतलब ड्रिलिंग की गई या जो भी एफर्ट्स लिए जा रहे थे थ्रू द मशीन्स, उसकी वजह से और ज्यादा कोलैप्स हो सकता है. So this has turned out to be a highly risky situation now. एंड द रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द रेस्क्यू पाइप जो इंस्टॉल किया गया था, जिसके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था, फूड सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा था, तो ये चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं. सो लाइक हेयर वी सी की वाइब्रेशंस की वजह से इट कैन क्रिएट मोर कोलैप्सेस, एंड दीज वर डिस्टर्बिंग द सरफेस इक्विलिब्रियम. सो लेट्स सी कि अब इसके बाद क्या स्टेप्स लिए जाएंगे. So basically we can't like stop, something else would be thought about now. Like यहाँ पे अगर आप लोग कुछ suggest कर सकते हो what can be done. मतलब टेक्नोलॉजिकली कुछ एडवांसमेंट्स ही हमें हेल्प कर सकती हैं. So 17 to 50 horsepower machine is running in the tunnel. Hansi, we have discussed that there is a challenge of rubble. एक सेकंड ऊपर करना. There is challenge of vibration that is disturbing the surface equilibrium, and it is causing the breakage of the rubble and falling into the tunnel. तो ये चैलेंज है, इसलिए हमें सहारा लेना पड़ा अमेरिकन मशीन का. ऐसे कल डिस्कस किया था इसका. तो कुछ और नया ढूंढना पड़ेगा. और अभी तो सिर्फ एक ही मशीन है जो यूज किया जा रहा है, स्मॉल excavation फ्यूचर में, as we've talked about safety measures के perspective से, when we have such tunnel projects, so it is important to look into the quality of soil and the nature of rocks which is present in that region, because even during monsoon season these kind of disasters and the risk it increases. So High Court caution. And I will add, okay, Amansi, 1 second. I will add one more point, that just we have talked about the agri stack, that is the technological input for the farming and agriculture sector, and it contains all of it. The agri stack is basically a collection of that. तो ऐसे ही हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट स्टैक होना चाहिए, जिसमें जो भी टेक्नोलॉजी का इनपुट होगा वो होना चाहिए एक ही जगह पर, डेटा फिर जो भी केस स्टडी, ताकि आने वाले समय में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम लोग डायरेक्टली उसी तरीके से डील कर सकते हैं इसको. तो बेसिकली स्टैक होना चाहिए, एक जगह डेटा कलेक्शन होना चाहिए ओवरऑल जो भी होता है. थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज करने में हेल्प कम हो सकता है. हाँ, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा उसके थ्रू, if we have the data, and वो हमें बेसिकली जो डेटा होगा वो हमें ज्यादा आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में ज्यादा हेल्प करेगा rather than रेस्क्यू एफर्ट्स में, because एम हमारा है preventing these disasters.
Then coming to this Haryana quota, जो 75% quota private sector jobs में provide किया गया था, local quota, High Court has quashed it. So let's see what is the reason given. So quashed the Haryana government's law guaranteeing 75% reservation in the private sector jobs for the residents of the state. So here we see this was implemented by the Haryana government. Basically, it was 75% reservation in the jobs where the like monthly salary was less than rupees 30,000 a month. So 75% jobs हमने ऐसी jobs में local residents के लिए reserve कर दी थी by the Haryana government. And later this was revised. Pehle it was 50,000, then it was revised to 30,000. So High Court has called it unconstitutional. So the detailed order that is still awaited. So let's see what would be the reasons exactly why it is being termed as unconstitutional by the High Court. So one reason might be because 50% जो reservation ceiling है, that might be breached here. That can be one of the reasons, possible reasons. Mansi, that 50% ceiling is not for the private sector. That is completely associated with the public sector. So actually, there are some constitutional and commercial challenges we have if the Haryana government gives such kind of नहीं, यहाँ पे reservation in basically, I think fundamental right to equality that would also get violated because you're providing 75% reservation. So how you have decided the 75% of figure, so that is under question. And apart from that, if you will do this, so it will lead to major shuffle in the industrial development. And the Haryana, the multinational companies which are operating in the state of Haryana, they will jump into other states. So that Economically भी impact होगा, right? economically it will have a longer repercussion. So जैसे हम बात करते हैं कि right now we are talking about reforms in the civil aviation sector, एक pricing mechanism, एक formula होना चाहिए for calculating the prices. So similarly it should be in the case of railways also, क्योंकि festive season में because demand increases, so इसलिए prices they also go through the roof, मतलब prices भी बहुत ज़्यादा hike हो जाते हैं. So in this case also festive season में like for छठ पूजा and और जो बाकी फेस्टिवल्स है दुर्गा पूजा की अगर आप बात करो, सो दी प्राइसेस दे टेंड टू फ्लक्चुएट अ लॉट, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. सो दिस कैन बी वन पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स because we see again the train travel, it is the lifeline and is increasingly becoming a tough deal for the people to travel through even railways. So we are focusing upon ki indigenous trains and the network को हम expand करने की कोशिश भी कर रहे हैं. We are having the Vande Bharat trains and different trains have been launched. So this is also one component of the reforms that we can talk about regarding the price. One reform I will suggest here that the Indian Railway should try to adopt this mechanism of one person, maximum 3 seats reservation policy. Because what actually happens is there are some dealers who actually reserves 1,000 seats with one ID, and then they sell it in higher prices. On the IRCTC website, you do not get the seats, but those dealers have the seats. So the railway department and particularly the railway ministry should use its digital mechanism to curb that illicit practice. ठीक है. So यहाँ पे kind of same reason कि cancellation charge भी किया जाता है and fairness के ऊपर question raise किया जा रहा था, how much it is fair कि अगर आपको cancel भी कराना है तो for that also charges would be there. एंड ये चार्जेस जो मान से आपने बताया, इन चार्जेस की भी जो अमाउंट है वो अराउंड 75% होनी चाहिए. क्योंकि अगर एक आम इंसान टिकट बुक कराता है तो वो ग्रेव सिचुएशंस में ही उसको कैंसिल करता है. लेकिन अगर डीलर जो होते हैं उनके अगर ऊपर आपको इस तरीके का कर्व लगाना है कि वो ज्यादा सीट्स रिजर्व ना करें, तो यू हैव टू यू नो increase the level of this cancellation charge, which is 75% of the ticket. Okay. So talking about the developments, the potential developments in the state of West Bengal, कौन से areas हैं जहाँ पे we can see like specialization and growth? So from the perspective of maritime trade,
This is going to be very important. So we need to focus upon green maritime, how we can promote that through basically what kind of materials are we actually using to build the ships, and the nature of fuel that we are using. This also we have talked in detail. We basically ethanol या जो liquid fuel है या solid fuel that is renewable, that can help in terms of the green fuel through the maritime, and this can also aid in carbon emission reductions, meeting our uh, carbon neutrality goal by 2070. Then industrial development is one important aspect. Again, there also are new industrial policy and the synergy that is going to play an important role. Then we talk about apart from this, we talk about basically the mangroves, how they act as the natural barriers to the cyclonic storms, which are basically more prone to that particular region in Bay of Bengal. And with this, we can promote, we've been seeing how shrimp cultivation along with the mangrove cultivation is being promoted in this sustainable and symbiotic manner. So this is an initiative which is being undertaken specifically in the state of West Bengal. So here, core infrastructural development context mein, this is like we can cite this one example. Even power stations are located there. So ये again I'm focusing more कि और कैसे मतलब specialized areas कौन से हो सकते हैं, education, tourism, ये तो फिर सब रहता ही है. So UNESCO अभी recently recognized Bengal's Durga Puja as it included in the Intangible Cultural Heritage 2022. So what this is one factual update. Social welfare schemes हैं, health के perspective से industry में 0 man days have been lost. So Shilp Sati, this is single window portal for the best ease of doing business experience. So digitalization ko how we can leverage in order to boost the economic growth. And even IT sector exports have also grown by 288%. So this is again a lesser known fact, specifically in the context of the state of West Bengal. Okay, Karuna has to say that efficient flood management in that also. Yes, mangroves play an important role there also. ये वर्ड यूज कर सकते हैं, जियोपॉलिटिकल फॉलोआउट ऑफ इजराइल हमास वॉर. Re-regionalization of Palestine. So after this war, we've been seeing that Hamas has been controlling Gaza since 2007, and it looked at these two realignments differently. So for Hamas, Sunni Islamist militant group Hamas है जो Gaza Strip में based है, and we've been seeing the coming together of Iran, जो कि एक Shia theocratic republic है, which has also been its patron for years, and Saudi Arabia, जो कि एक Sunni monarchy hai. So there has been variety of the Hamas brand of political Islam. That is a welcome development. So these are basically this is one latest development around this, but it saw Saudi Arabia normalizing ties with Israel, which has been occupying Palestinian territories at least since 1967. So how basically we're seeing a shift in the geopolitical strategies, how things have been realigning. So in this context, this is one update. So when we talk about a wider conflict, as we were discussing it, as Sir asked us also, key it might lead to a wider conflict also. So inclusion of countries like Saudi Arabia, Iran, and then on the other side, when we talk about the West, we see US and even UK, how they've been participating and supporting Israel in this thing. So it has basically become Arabs versus the Jews. And Camp David Agreement 1978, this was already covered. So this is one factual update. Oslo Accords, it is also related to Israel and Palestine issue, signed in 1993. But still we saw that despite signing of these accords, we couldn't arrive at a solution. So how Arabs see it? So Arabs, they are the Muslims. So both the Arabs and Israel, they were ready to sidestep the Palestine question and chart a new course of partnership, but new regional realities. What are the new regional realities which emerged after October 7?
which is after the attack by Hamas. So Palestine issue, it has now come back to the fore of the West Asian geopolitical cauldron. So this became a big issue as we're talking about a wider conflict form. Second, we see Israel's disproportionate and indiscriminate attack on the Gaza. It has triggered massive protest across the Arab street. So we've been seeing how even through the land, the attacks have been carried out by Israel. It has captured the territory as well. Third, there's always the Iran factor. So as we just talked about, that it is basically a Shia theocratic republic. So even since Palestine issue, it got re-regionalized, Iran has stepped up its pro-Palestine rhetoric. So Iran supports Palestine and it called for collective action against the Israel. And then there is also participation of Yemen, also the Houthis, which is the rebel group in Yemen, and Hezbollah, it is located in Lebanon. So Lebanon is also towards the northwest side of Israel. So it has launched limited attacks on Israel. So we need to remember how many different countries, which country is supporting Israel and which is supporting Hamas or the Palestine. And then we've talked about US, it is supporting Israel, how even in this war has been providing arms and ammunition to Israel, further fueling this conflict. And regional dynamics की अगर हम बात करें, so specifically India के context में how India sees it, so we have seen कि India का जो stand है, we support the two-state solution. We have seen how even in our foreign policy, it is how it has changed specifically after 2014. So we have seen de-hyphenation of the ties. Apart from this, this is definitely going to impact our energy security because post this war we have seen क्रूड ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं. उसकी वजह से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और एक्सपैंड हो जाता है, वो और इंक्रीज हो जाता है, विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दिस वी टॉक अबाउट कि अभी लेटेस्ट हमने वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस किया था आफ्टर G20 2023. सो इवन द प्रोग्रेस ऑफ that economic corridor would also get impacted. इसकी वजह से regional stability जो है वो और impact हुई है. तो how much sustainable and desirable is the West Asia Economic Corridor in given conditions? So that is one another question. So as I just mentioned about, again, OPEC plus cooperation, talking about energy security perspective, say even trade would be impacted because we've seen कि this particular जो trade route होगा, that would be from the Arabian Sea to UAE and Saudi Arabia के through Israel it would be passing. जो Haifa port है, that is in Israel. So this was basically the proposed trade route under this West Asia Economic Corridor. So this would also come under question because ये area या Saudi या मतलब कि इजराइल पैलेस्टीन रीजन और ज्यादा अनस्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें. एंड दिस ऑल्सो वी हैव मेंशन्ड अर्लियर कि चाइना ब्रोकर्ड ईरान और सऊदी अरेबिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो रिस्टोर किए गए थे. सो इवन बेसिकली टाइज बिटवीन ईरान सऊदी अरेबिया दे आर ऑल्सो नॉर्मलाइजिंग एंड how basically they view this Israel conflict. So these two things that needs to be understood. So this is how basically the things have been reshaping and changing in West Asia. So Oshik, do you want to add something else जो मैंने miss कर दिया while discussion? I will add that India supports the Palestinian people but condemns terrorism at all cost. Yes. तो ये डुअल पॉलिसी नहीं बोल सकते, इंडिया का प्राइमरी पॉलिसी विद रिगार्ड टू मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया. हाँ, and this is why India ने even जो UN का resolution था उस पे वोट भी नहीं किया. We've abstained from voting because उसमें clearly it is not accusing Hamas as a terrorist group, and that is why we have not voted on that. I wanted to ask, since you said India goes for two-state policy, what exactly is that? Okay, two-state solution. Okay, Achal, would you like to answer this? No, you can. Okay, anyone else? Sachin, two-state solution क्या है? पैलेस्टीन दोनों अपने अलग अलग स्टेट में रह सकते हैं.
मतलब पैलेस्टीन अभी कोई रिकग्नाइज्ड कंट्री नहीं है, तो इफ यू गिव दैट सोवरेन राइट्स टू पैलेस्टीन को, अगर हम इंडिपेंडेंट कंट्री क्रिएट करते हैं एंड इजराइल इज अ कंट्री, सो दिस वुड बेसिकली, इट इज प्रपोज्ड एज अ सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट. So this is what basically this term two state solution refers to. So we support independence to Palestine. This is what has been India's stand. Basically, Tia, right from the starting 1948, when Israel was established and it got independent, Palestinian people strived for independence. So right from that, the successive government of the Palestine, whether it is Yasser Arafat of the PLO or even Hamas right now of the Gaza, they have tried to make the solution, that is from sea to the river, Palestine will be free. But the Israel is talking about whole of Palestinian and West Gaza as their own region. तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, इसके कारण सॉल्व नहीं हो पा रहा है. तो बाकी जो कंट्रीज है, अदर कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना एक्सेट्रा, दे सपोर्ट दैट बोथ नीड्स टू कम टुगेदर एंड सॉल्व दिस इशू. और तभी हो सकता है जब टू स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट मतलब इसराइल और पैलेस्टीन का दोनों का वहां पर लोकेशन होना चाहिए, दोनों को कंट्री होना चाहिए, वो बात होता है. तो टू स्टेट सोल्यूशन कौन इसको डिसअप्रूव करता है? तो पैलेस्टीन डिसअप्रूव करता है. वो बोलता है कि भाई मेरा सब लैंड है, क्योंकि इसराइल बाहर से आए और रहे. इसराइल बोलता है कि नहीं, पैलेस्टीनियन का भी लैंड मेरा है, क्योंकि राइट फ्रॉम जूडियो क्रिश्चियन एरा, एंशियंट 1 BC के पहले से वहां से मैं रहता था वहां पर. तो ओवरऑल ये इशू है, दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं. लेकिन बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, रशिया एक्सेट्रा, दे सपोर्ट टू स्टेट सोल्यूशन. तो ये है ओवरऑल. All right, thank you. So here we have one of the semi-annual reports, which is published by basically World Economic Outlook. हम इसको बोलते हैं. It is titled, themed as Navigating Global Divergences. So it is published by IMF. So this is one important fact. ऐसे questions prelims में पूछे जाते हैं. So IMF publishes the World Economic Outlook report, and यहाँ पे basically it is revise the projected GDP growth for India. As we've talked about कि हमारा जो growth momentum है, that remains stronger comparatively when we look at the economic slowdown and economic challenges, geopolitical shifts, and basically the wars going on in different regions like West Asia, Russia-Ukraine war. Then there is instability in Yemen also, and we are again seeing again tensions are there even in Indo-Pacific region regarding the Taiwan Strait. So given that India's growth momentum that remains strong and success is sweeter as the IMF revised downwards, world GDP growth has been revised downwards, including China. So China में भी economic slowdown हो रहा है. So even that is a cause of concern, because China कुछ areas में like जो critical elements है, rare earth elements है, like lithium हो गया, uranium हो गया, या सेमीकंडक्टर चिप्स हो गया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API जो कि हमें लाइक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का रोल प्ले करते हैं. सो उसमें चाइना की ग्लोबल सप्लाई में डोमिनेंस है. तो अगर चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो कहीं ना कहीं उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर देखने को मिलेगा. सो दैट इज वाई चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन हमारे लिए कंसर्न है. एंड so we've been also talking about China plus one strategy also, and apart from this, how India can basically integrate more with the global value supply chains that's there, and India replacing China as the global manufacturing hub. So this is basically the vision that we have, and along with this, not getting trapped into the middle income trap. Going forward by 2047, we'll be completing 100 years of independence. So growing deficit with China. Although India, we are again promoting जो हमारी import dependence है China के ऊपर, we are for that only we are promoting self-reliance, indigenization. For that we have Make in India, we have Atmanirbhar Bharat program. For that we are again incentive के लिए we are providing the production linked incentive scheme, so that उसमें जो आप incremental output करोगे उसके ऊपर आपको financial incentives मिलेंगे. So that is a way to encourage more FDI, more industries in India, both in brownfield and the greenfield industries.
And human development index credibility की अगर बात करें social development में we've been seeing बेसिकली इंडिया सेस की जो मेथोडोलॉजी होती है, चाहे आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करो, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करो, सो वी ऑफन से बेसिकली वी डू नॉट कंप्लीटली ट्रस्ट जो मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग दीज इंडेक्सेस. सो that is one concern by India. And when we see that जो HDI index है, that is published by the UN development programs, human development index, it is one party is United Nation. Apart from this, जो HDI इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, और इंडिया की वैल्यू वी हैव बीन सीइंग इट इज मॉडरेटिंग अराउंड 0.63. So this is the thing. So uncertain future in the sea of poppies. So 3 districts, Madhya Pradesh or Rajasthan, में together they contribute 80% of India's opium production. So already facing the problem of stagnant procurement rates. This is one challenge, जिसकी वजह से farmers cost of production को cover नहीं मानसी, कर पाते हैं. And you yes, can read. तब तक मैं पूछता हूँ, सचिन, why is poppy grown in India? Why is poppies, मतलब क्यों पॉपी को ग्रो किया जाता है, अफीम को क्यों ग्रो किया जाता है, ओपीएम को इंडिया में? बेसिकली ड्रग्स के लिए भी यूज होता है, मेडिसिन के लिए भी, तो इसलिए ओपियम को ग्रो किया जाता है, यूटिलिटी फार्मास्यूटिकल्स. हाँ ठीक है, ट्रू. यू कैन कंटिन्यू मानसी. ठीक है. हाँ, यही कंसर्न है. मतलब मेजरली वी बीन टॉकिंग अबाउट इवन जो जनरल एमएसपी हाइक भी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पे भी यही कंसर्न था कि जो इनपुट प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो फार्मर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर नहीं कर पा रहे, तो वो प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं देखा जा रहा है इन दी एमएसपी बाय द गवर्नमेंट. सो इवन इन दिस केस ऑल्सो जो मार्केट प्राइसेस है दे हैव बीन स्टैग्नेंट. जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस है, गवर्नमेंट जिस प्राइस पे प्रोक्योर भी करती है, दैट इज बीन स्टैग्नेंट. सो similar concern exactly यहाँ पे है. And then again farmers are also angry with the government for opening opium production and processing to the private players. So generally agriculture sector में भी we see contract farming के around भी कुछ concerns है. So वहाँ पे भी private players के आने की वजह से farmers को जो problems हैं, similarly यहाँ पे भी exactly वही challenges हमें देखने को मिल रहे हैं. And Mewar region में we have basically the opium production in India. So opium it can be misused also. ड्रग ट्रेड के लिए एज अ ड्रग ऑल्सो इसको मिसयूज किया जा सकता है. वॉट इफ द ड्रग माफिया गेट्स एक्सेस टू द एल्कलॉइड, सो ड्रग्स विल बी रैम्पेंट हेयर. सो ये कंसर्न है अराउंड दिस थिंग. एंड दिस इज अगेन एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे वी सी दी कल्टिवेशन. सो वी आर हैविंग अ पॉलिसी. सचिन क्या कह रहे हो? स्टेगमेंट जो प्रोक्योरमेंट रेट्स था, इसे एक्सप्लेन करेंगे आप एक? स्टैग्नेंट प्रोक्योरमेंट रेट्स मतलब कि जिस रेट पे ओपियम प्रोक्योर किया जाता है, गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, इवन जो मार्केट प्राइसेस है जिस पे फार्मर्स इसको सेल करते हैं, वो स्टैग्नेंट है, वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं. अगर वो इंक्रीज होंगे तो फार्मर्स को ज्यादा मतलब पैसा वापस मिलेगा ना बेचने के बाद, तो वो प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं. बट उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो इनपुट के प्राइसेस है, जो उनको इनपुट चाहिए ओपीएम प्रोडक्शन के लिए, वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, बट मार्केट प्राइसेस या जो उनका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, वो नहीं इंक्रीज हो पाता है. तो इसकी वजह से उनको लॉसेस होते हैं. एंड दैट इज वाई ऑल्सो जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में वी से की farmers they end up suiciding because of this reason also, because private money lenders का भी dominance ज्यादा रहता है, तो they also charge high interest rate. So ये एक तरीके से जो डेट साइकिल है ये स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस इज अ विशियस साइकिल जो एक नेवर एंडिंग साइकिल में टर्न हो जाती है. So we're talking about the policy. So we have changed the policy of opium in 2021-22 crop year, where private players have been allowed to produce this from the opium poppy to boost the yield of the alkaloids. So as Ashik was talking about कि हम क्यों इसको इंडिया में कल्टिवेट करते हैं. सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इट इज यूज्ड. एंड जो ये कंसर्न है कि ड्रग माफिया को अगर एक्सेस हो जाएगी, तो है नार्कोटिक्स ब्यूरो, they have an important role over here, Central Bureau of Narcotics. And apart from this, so CPS method
what is this? We'll have to look exactly what is the CPS method. So we have shifted to this. This is concentrate of poppy straw. And बेसिकली पॉपी के जो types, हाँ, ऊपर two types हैं हाँ मिल्क होता है ना, narcotic उसको material. निकाला जाता है और फिर सुखाया जाता है, फिर उसको कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है। हाँ, मतलब दो अगर तरीके कोई से भी ओपियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो पॉपी कल्टीवेट होता है। ओपियम गम बन सकती है जिसको लैटेक्स भी बोलते हैं, और एक होता है कॉन्सेंट्रेट जो उसको हम निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में ऑल्सो टू रिलीव क्रॉनिक पेन दिस इज यूज्ड। सो ओपियम कंटेन्स मॉर्फिन, सो मॉर्फिन हमें हेल्प करता है गिविंग रिलीफ फ्रॉम द क्रॉनिक पेन। एंड फ्लिप साइड इज दैट कि बेसिकली मिसयूज के पर्सपेक्टिव से जो चैलेंज है, जो रिस्क है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ओपियोइड्स लाइक हेरोइन, so that can be used as a drug. So farmers, they collect opium gum and they send it to the government opium alkaloids work. Nimuch mein, this is the factory which began operation 1935. So Central Bureau of Narcotics ही सिर्फ इसको procure करता है, and कोई private organization या openly इसको market में आप sell नहीं कर सकते हो। And CBN, Central Bureau of Narcotics, functions under the Union Finance Ministry. So we have shifted to the CPS method, and demand for the Indian opium global markets may it is reducing. So even this is causing a problem. Decreasing exports. Apart from this, this is basically labor intensive industry है, CPS industry जो है, and it is been lancing method के through basically used by the farmers now. So it will also help in ensuring better drug law enforcement, as it will reduce the illicit market for the opium gum. Okay, so this is all around this. And farmers का एक और concern है कि transparency नहीं है in this CPS mechanism, so they demand for more transparency in this, so that again farmers का trust increase हो सके. मानसी इसको बोले लेते हैं जो मैसेज में Anchal has said that Dhanvantri Nighantu also mentions about the opium as a remedy. ठीक है. Karuna says that it is also grown in UP, MP, Rajasthan, also in North Eastern state, Assam. Yes. हाँ, तो अगर प्रीलिम्स में आ सकता है तो असम नहीं पूछा। हाँ, as a like remedy for ailment ये हम discuss कर चुके हैं. So next COP, Conference of Parties 28 under the UN Framework Convention to combat climate change would be there in Dubai. So India has a critical role in this. So all net zero projections for the 2050 do account for all the limited amount of the fossil fuels. We need to make sure that mix is right one to achieve this जो target है Paris Agreement के under 1.5 degree. Practical solutions are needed. At the same time, implementation is going to play the entire role. So practical solutions on how to transition the people in developing countries to new jobs without compromising on the development. So this is going to play an important role. And green energy transition में भी हम बात करते हैं. Transition important है, but at the same time energy security भी important है. तो दोनों चीजों को हम कैसे साथ लेके will ensure the transition. That is going to play an important role. How we can protect biodiversity, the rights of the indigenous people, and ensure jobs for women and children in the future. So role of women will be again important when even we talk about the fight against climate change. So इसके अराउंड वी हैव बीन सीन कि इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है इंटरनेशनली, एज वी हैव सीन कि इंटरनेशनल सोलर राउंड्स हमने अनाउंस किया है, वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड, दिस इज अनदर इनिशिएटिव. सो वी आर प्रमोटिंग बेसिकली हाउ रिन्यूएबल एनर्जी को ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन कैसे हम ज्यादा कर सकते हैं. एंड देन रोल ऑफ ग्लोबल साउथ ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी वर टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ ब्राजील, लाइक इट स्पेशलाइजेस इन दी sugarcane technology that we have in terms of producing the ethanol. So even India is basically collaborating with Brazil to know more and for the technology transfer. So that would be helping us in generating more of green fuel in the form of ethanol. Green hydrogen mission है हमारे पास,
And again, green hydrogen, basically the byproduct is a water vapor, so that is why it is called green in nature. And जो बाकी different types of hydrogen है, we should also know about them, how they are different from each other. Like blue hydrogen की जब हम बात करते हैं, तो blue hydrogen basically जो भी carbon emissions होते हैं, they are completely captured. मतलब carbon capture is the important element in blue hydrogen. So even that is also sustainable because carbon capture किया जाता है. And in this context, India में Saudi Arabia की जो Aramco company है, that is investing in blue hydrogen. So we can also look for different conventions क्या हैं around climate change. So deep fakes क्या हैं? Achal, what is deep fake? It is a cyber activity that is मतलब उसमें ऑडियो और वीडियो को चेंज कर दिया जाता है और वो एक तरीके से इंटरनल थ्रेट भी है जो कि साइबर सिक्योरिटी जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड है. ठीक है. अभी रिसेंटली केस हुआ था ऑफ रिलेटेड टू अ सेलिब्रिटी, तो कंप्लीटली जो वीडियो में था, हर फेस वाज रिप्लेस्ड बाय समवन एल्सेस फेस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज आल्सो कि वो फेक है. सो उसकी वजह से और ज्यादा चांसेस रहते हैं उसको मिसयूज करने के. मानसी, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ फेक क्यों नहीं वर्ड लिखा हुआ है, डीप फेक ही क्यों है? डीप मतलब अच्छा, तो आप इसमें हाँ, डीप फेक हाँ हो गया ना कि वो कंप्लीटली उस पर्सन का ऑडियो आप यूज कर रहे हो और वो एग्जैक्टली सेम लगता है. यू कांट मेक आउट कि उसमें हाँ, कोई इसलिए डीप फेक प्रॉब्लम है, है. हाँ, मतलब कि इसमें कोई इतना अपीयर्ड डीप. रियल, आई कुड नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन हाँ. द बोथ द हम्म. इंडिविजुअल. हाँ, इवन वीडियोस में भी अगर आप देखोगे तो यू विल नॉट बेसिकली एबल टू आइडेंटिफाई कि एक मतलब इसको क्लोन करके किया हुआ है.